Good morning, everyone. This is Sahil Gulkarni. I'm from NMIMS SHIRPUR, and my branch will be computer science, specialization in data science. So, in this video, I'm going to explain the concept of method overloading in object oriented programming. First, let's quickly understand the bigger picture. Uh, OOP is a programming paradigm based on classes and objects, and it helps us organize code in a structural, reusable, and maintainable way. Some of the main OOP concepts are encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. Method overloading and constructors are also important part of OOP because they improve code efficiency, reliability, and maintenance. Now let's move on to method overloading. Method overloading means having multiple methods with one same name inside the same class, but those methods must differ in parameters. This difference can be in numbers, in parameters, or in the order of the parameters. Because of this, the compiler can identify which method should be called depending on the argument we pass. That is why method overloading is considered as an example of compile time polymorphism. So here we can say method overloading means multiple method having same name in same class. The method differ in number of parameters, type of parameters, and order of parameters. And it is also example of compile time polymorphism. Now let's move forward. Now let's understand the rules of method overloading. The first rule: in that method, the method must have same name. The second rule is that parameter list must be different. This is very important. We can change the number of arguments and the data type of argument or the sequence of arguments, but return type alone cannot be used in distinguished overloading method. In other words, in two methods only differ by return type and everything else is the same. That is not valid method overloading. Also, method overloading can be applied to both static and non-static methods. Now let's talk about why method overloading is useful. uh, One major advantage is that it improves code reliability because we can use the same method name for a similar task. It also reduces code duplication since we don't need to create completely different method names for related operation. Another advantage is flexibility in function calls. Because the same method can work different inputs, it can also make debugging easier. Since related logic stays grouped under one method name, in real application, method overloading is commonly used in mathematics operation like addition, multiplication, and input and output function, APIs and libraries, and situations where we want to handle different data types using the same logic. Now let us understand everything with an example. We can have a class named calculator. Inside this class, there are multiple methods named multiply. The first method takes two integer parameters and return their products. The second method takes three integer parameters and return the multiplication of the three values. The third method takes two double parameters and return their product. Notice that method name is the same in all classes, but the parameter list changes. This is exactly what method overloading is. In the main method, an object of calculator class is created. Then different version of multiply method are called. For example, when we call multiply with two integer values, the compiler selects the version that accepts two integers. When we pass three integers, it selects the version with three integer parameters, and when we pass decimal values like double, it selects the version that works with double parameter. So the compiler decides which method to run based on the argument provided. Thank you, and this was my explanation. Now Swami will carry forward with the constructor concepts. So hello friends, welcome. Today we are going to discuss about the topic of constructors.
So first of all, we will start about the definition of the constructor. A constructor is a special method used to initialize objects. The constructor basically used to initialize the objects. It is automatically called when an object is created. When we create the object in the main class, the constructor automatically gets invoked. Constructor name must be same as the class name. So here we are discussing about the syntax of the constructors. That constructor name must, it is compulsory that its name should be same as the class name. It has no return type, not even a void. Remember that it has no return type. Of course, written here, it has not even a void return type. So second, we will discuss about how many types of constructors are there. So first one is the default constructor, which has no parameters, and if not, it is directly defined by the compiler. Second, parameterized constructors, which accepts the parameters. We can initialize, we can take the parameters inside the constructor, that may be int, double string, as per your preference, used to initialize objects with specific values. Constructor overloading, multiple constructors with different parameters. So हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग में हम एक मेथड क्रिएट करते हैं और उस सेम नेम के मेथड से हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जैसे कि int x, int y, हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए, उसके बाद int x, int y, int z, हमने तीन आर्गुमेंट्स पास किए। लेकिन याद रखना है कि इनमें जो मेथड का नेम होता है वो हमेशा सेम होता है और कंपाइलर जो होता है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मेथड को सिलेक्ट करता है। सिमिलरली होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, जैसे कि हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग में हमने एक ही मेथड से डिफरेंट आर्गुमेंट्स के थ्रू हमने एक ही मेथड को बार बार कॉल किया, तो हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर वही रहने वाला है बट हम उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो पहला कंस्ट्रक्टर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स ही पास ना कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स पास कर रहे हो, जैसे कि हमने वहां पर दो नंबर्स को ऐड करने के लिए लिया था int x, int y। यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स से हम उसको कॉल कर सकते हैं। याद मैंने बस इतना ही रखा है कि कंस्ट्रक्टर का जो होता है वो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम के इक्वल होता है, मतलब हमेशा उसके सेम ही होता है, अलग नहीं हो सकता। So now we will discuss about the example of the constructor. So first of all हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया है जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का और एक इंट डेटा टाइप का। So डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये उसका कोड है, दिस इज द सिंटैक्स फॉर इट, सेम एज द क्लास नेम एज आई सेड एंड हैविंग नो रिटर्न टाइप, और इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट्स भी पास नहीं किए हैं। दैट्स इट, नेम इक्वल्स टू अननोन एंड आईडी इक्वल्स टू 0। As I said, there is a string data type and int id. तो सेकंड जो है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग n and int i। यहाँ पर जो n है हम नेम के इक्वल कर रहे हैं, जो i जो है हम id के इक्वल कर रहे हैं। और वॉइड डिस्प्ले हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का नेम एंड id दोनों स्टोर करने वाले हैं। लास्ट जो है वो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एक मेन क्लास बनाने वाले हैं, जिसमें हम E1 एम्प्लॉय के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, E2 एम्प्लॉय के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि E1 में हमने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने ब्लैंक रखा है, एंड E2 में हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, स्ट्रिंग एंड इंट, इसीलिए अमित स्ट्रिंग नेम एंड 101 उसकी आईडी, और उसको हम डिस्प्ले करेंगे E1 वाले को E1 डॉट डिस्प्ले के साथ एंड एम्प्लॉय 2 को E2 डॉट डिस्प्ले के साथ। Now we discuss about the advantages and application of the constructors. Advantages of the constructors. Ensures object initialization. कंस्ट्रक्टर्स में हम ऑब्जेक्ट अपने आप इन्वोक हो जाता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाता है। सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग सेपरेट सेटअप मेथड्स। इम्प्रूव्स कोड स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी, कोड के स्ट्रक्चर को एक बेटर फॉर्म देता है एंड रीडेबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल होता है। एप्लीकेशंस, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन बैंकिंग सिस्टम्स में बहुत यूज होता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स सिस्टम्स में ज्यादा मेनली यूज होता है, एंड गेम डेवलपमेंट भी इसका कंट्रीब्यूशन है। कंक्लूजन, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Method overloading improves flexibility and code readability by allowing the same method to perform different tasks. मेथड ओवरलोडिंग की वजह से हम कोड की रीडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को
अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एंड एक मेथड कितने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है उसका डिफरेंट स्टाइल में हम समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट्स आर प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड व्हेन क्रिएटेड। एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली इनिशियलाइज कैसे हो सकता है ये हमें कंस्ट्रक्टर्स बताते हैं। बोथ कंसेप्ट्स हेल्प इन राइटिंग क्लीन, इफिशिएंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स। इन दोनों यानी मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स की मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को क्लीन, इफिशिएंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हैं। So thank you guys. This was from my side. Hope you understand everything.